Hello everyone, welcome back to the YouTube channel The Ocean of Knowledge. Today we are back again with another YouTube video, and in this video we will be doing usual problem solving, and we will be solving daily problem of LeetCode. So let us directly head towards understanding of the problem. And the question states that you are given two arrays nums1, nums2 consisting of positive integers only. You have to replace all the zeros. Please remember this, we have to replace all the zeros in both arrays with strictly positive numbers. So we can place only positive numbers. So minimum value that we can place is 1, such that the sum of elements of both arrays become equal. Okay, and return minimum sum you can obtain, or return -1. This is the question. Initially question you might not have understood completely, but let us see the example given here. Here as we have been told, we have to replace all the zeros. So number of zeros present in this array are this, and the second zero array, second array, the zero present in the second array is this one. Two zeros in the first one and 1 0 in the second one. Okay, no worries. And we have to replace all the zeros with some strictly positive integer value. So minimum value that we can place is only 1, and we have to make sum of both these arrays equal. Okay, so first of all, see, as we have to replace all the values with strictly positive integer compulsorily, mandatory, so let us replace values of all the zeros with 1 initially. This is not a final answer, I am just saying replace all the zeros with the value 1. So this will be the final array: 3 2 1 1 1 6 5 and 1. Okay, so this is the final array that we have got. Now what is the sum of this? 3 plus 2 5 plus 3 8, and this is the 6 plus 5 11 plus 1 12. Okay, so 8 and 12 is the sum. So what is the minimum sum that we can get? We have to make both of these equal. So see, you can't decrease 12 to 8, but you can increase 8 to 12. लॉजिकली भाई, मतलब बड़ी में से छोटी तो नहीं करोगे, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली 1 तो डालना ही है, तो या तो हम वैल्यू बढ़ा सकते हैं, कम होने का तो कोई चांस ही नहीं है. तो we can go from 8 to 12. So in this case the minimum value or minimum sum of both the arrays when made equal, it will be 12. इनिशियली देखो 1 तो रिप्लेस कर ही देना है, उसके बाद यहाँ जो जो जितनी भी वैल्यू, सपोज यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो ऑब्वियसली छोटे को बड़ा करोगे, तो यहाँ पे 8 की जगह 12 करना है, तो कितना 4 और बढ़ाना है ना. तो यहाँ पे जहाँ पे 1 रखा था 0 की जगह 4 बढ़ाना है, यहाँ 1 की जगह कर दो 3, यहाँ पे 1 की जगह कर दो 3, 3 3 6 7 और 9 3 12. See, but this is only possible when we have zeros in the area. Without 0 it won't be possible. See, here is the case in which 0 is not present. In first array 2 zeros are present, in the second array no 0 is present. So in this case sum of the first array is 4, second array is 5. Okay, now if you replace, अभी देखो 0 को 1 तो करना ही है, मैंडेटरी, इसको 1 कर दिया, चलो इसका सम हो गया. ओके, यहाँ पे 1 था, इसका सम हो गया 2 और 3 4 और 6, इसका सम हो गया 6. अभी इसका है 5. अभी as I told you, we have to go from smaller to larger value, so we have to go from 5 to 6, but in this case there is not any 0 in the array present, तो रिप्लेस कर ही नहीं सकते. So in this case you have written -1. I hope the question and the some sort of intuition is clear to you. See, this problem is related to observation and what are the different combinations and possibilities that you can figure out. Once you figure out all the possible combinations and possibilities, the question is solved. So this was the case. First is to replace all the zeros with value 1. All the zeros present in there, replace them with 1, क्योंकि करना तो है ही,
तो मिनिमम वैल्यू से पहले से ही रिप्लेस कर देते हैं, बाद में जो देखा जाएगा वो होगा वो. Okay, so this is the main solution. See, you will say that you are not explaining in detail, but this is such kind of problem which can be understood by making possibilities only. So, okay, let us try to frame all the possibilities which are possible. See, I was also not able to solve the problem in first time. Also got a wrong answer one or two times. Then only I got some of the cases which I was not able to visualize initially when I was framing the logic of the problem. But as soon as I got some wrong answers on test cases, I got some of the edge cases. So the problem is mainly of figuring out all the edge cases. Okay, no worries. Let us find out the first case. What's the first case? First case is you are given two arrays, this and this. Now initially you figure out the sum. Let us tell it sum 1, let us tell it sum 2. Okay, so this is it. Now first possibility is, for example, S2 is greater than S1. S2 is greater than S1. So what we have to do in this case, we have to increase S1 obviously. But what if, okay, let us say number of zeros in first array is Z1 and number of zeros in second array is Z2. Okay, if sum 2 is greater than sum 1, then obviously we have to increase the value of S1. Now what if there are no zeros present in S1? Then we can't increase any value because we can only replace values instead of 0. But what if Z1 equal to 0? Z1 equal to 0, return -1. Okay, this is the first case. Vice versa can be also true. S1 is less than S2. Okay, so in this case, okay, S2 उल्टा लिख दिया, S2 लेस देन S1, तो हमें इंक्रीज करने पड़ेगा S2, increase S2. But what if Z2 equal to 0? Similarly, return -1 in this case also. Okay, third case. This is the case when both S1 and S2 are equal. S1 equal to S2. No problem. But for example, number of zeros. Okay, S1 is equal to S2. But number of zeros in first array are not present and Z2 is greater than 0. As I told you, we have to replace all the zeros with the 1. So पहले में तो 0 है ही नहीं. अगर इसमें 0 है तो obviously इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. तो हमें S1 को भी S2 के और मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा. पर S1 में 0 है ही नहीं. There is not any 0 present in S1. So we can't make this equal. So here also return -1. And similarly, or Z2 equal to 0 और Z1 greater than 0 है. Okay. एक केस और हो जाएगा अगर S1 इक्वल टू S2 है और Z1 इक्वल टू Z2 भी है, तभी तो हम करेंगे, मतलब जो भी करेंगे वो देखते हैं क्या रिटर्न करेंगे. और फाइनल केस ये है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सच नहीं हो रही है, हमारे पास होगा S1 करस्पॉन्डिंग Z1, S2 होगा करस्पॉन्डिंग Z2 होगा. तो क्या रिटर्न करेंगे हम? ऑब्वियसली मैक्सिमम ऑफ S1 प्लस Z1, S2 प्लस Z2. क्योंकि बिकॉज मैंने बताया यहाँ पे हमारा सम हो रहा था 8, जीरोस और सब कुछ लगा के 8 हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था 12. वी कैन ओनली मूव टुवर्ड्स लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू. सो ऑब्वियसली maximum of these two will be your answer. Maximum of these two. Okay. See, last case I think is okay. Let me take this example. Yes. Here the sum is 161 and here the sum is 159. So see, we have to replace all the zeros with a 1. So if we replace this as a 1, just a second, let me use some other color here. This 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, this is sum of this is 159. Ones are not included, and sum of this is 161. Okay, and what are the zeros present here? 1 and 2. So after zeros, 159 plus 10, 169, and after zeros, 163. See, these are the two values that we have got right now. But see,
we have to the minimum sum possible, or the sum which has to be made is 169, because we have to replace all the zeros with the 1 here. So the sum which has to be mandatory is 169. इससे कम तो बना ही नहीं सकते. ये 163 है, पर इसमें दो ही जीरो है. अभी हमें 169 तो चाहिए ही चाहिए दोनों को इक्वल करने के लिए. तो हम क्या करेंगे, इसके जीरो में ज्यादा वैल्यू डाल के इसको कर देंगे 169. So as I told you, maximum of both of them will be your answer. And yes, these are all the conditions. Yeah, question is solved. Z1 काउंट कर लिया, Z2 काउंट कर लिया, S1 काउंट कर लिया, S2 काउंट कर लिया, खत्म है. As I told you, अगर सम कम है पहले का तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, अगर उसमें जीरो नहीं है, रिटर्न -1. नेक्स्ट वन, सिमिलर केस ऑफ दिस, अगर S1 बड़ा है और Z1 के जीरो कम है, ठीक है, और S2 प्लस Z2, ओके, हाँ ये हम डिस्कस करना भूल गए. ओके, 1 3 5, ओके, दिस इज द फर्स्ट एरे, एंड सेकंड एरे इज 1 5 0 0 0 0, ओके, दिस इज द एरे गिवन. इसका सम कितना है, 9 है. ओके, अच्छा, नो, ओके, इसका मैं कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ यहाँ पे 4. Okay, this is the array given to us. Yeah, so this is the value 9, and this, अगर इसका सब कुछ मतलब 0 को 1 कर ही दिया हमने सबके, तो क्या होगा वैल्यू, 5 4 9 हो जाएगा. इसको हम कर देते हैं 3, चलो इसको कर दिया 3, सॉरी. तो वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी. इसके सभी जीरोस को हमें रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा. वैल्यू आ गई 8, तो भी इसको बड़ा करना पड़ेगा. सेकंड इसको, ओके, मैं केस ही गलत लेना हूं ना भाई. इसको कर देते हैं 4 0 है ना, 4 5 5 और 9 और 2 करते हैं, ठीक है. इसका आ गया 11, ठीक है, इसका आ गया 11, इसका इतना सम आ गया 11, और इसका सम आ रहा है 9. अभी 9 को 11 करना पड़ेगा, पर इसमें कोई जीरो है ही नहीं, तो ये -1 आ जाएगा. तो ये दो, ये केस हो गए. अभी जैसे कि हमने बोला दोनों का सम इक्वल है, ओके, पर अगर दोनों में से एक का भी जीरो, जीरो का काउंट जीरो है, ऑब्वियसली सम बढ़ जाएगा, क्योंकि एक में हमें जीरो को 1 करना ही पड़ेगा. रिटर्न आ गया -1. अगर दोनों इक्वल है, दोनों का जीरो भी इक्वल है, तो रिटर्न S1 और S2, इट डजंट मैटर. और वरना जो नेक्स्ट वाला केस था यही है, अगर S1 Z1 से बड़ा है तो S1 Z1 और S2 Z2. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भैया, ऑफ एन, क्योंकि हमने पहली बार ही Z1 Z2 S1 S2 कैलकुलेट करने के लिए जो ही करा था, दैट्स द मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और बाकी का तो लॉजिक स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है. So I hope the question is clear to you. Please give this problem a try. We will be meeting in the next video very soon. Till then, keep learning, keep hard working. Thank you very much.